Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 26th of August. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video students, we are talking about President Draupadi Murmu. Ma'am, she gave assent to the promotion and regulation of online gaming bill, and you must have seen that the online platforms where gambling used to happen, the gaming used to happen, has been now banned, and many of them has shut their shop. We will be discussing about it. Then Nepal has officially joined India-led International Big Cat Alliance, that is IBCA. Then Amit Shah, our Home Minister, inaugurated two-day All India Speakers Conference in New Delhi, and RRU has signed an MOU with SSB to strengthen training and academic collaboration in national security. What is SSB? Shastra Seema Bal. All these things and many more will be discussed in this video, so stay tuned with us till the end. If you are new here, do subscribe to us students and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Also students, we upload the daily current affairs at 5 a.m. in the morning on regular basis, so do watch these videos on daily basis as the content provided here is very refined. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. We are talking about President Draupadi Murmu ma'am. She gave assent to the promotion and regulation of online gaming bill. Students, recently we can say there was a storm in the online gaming sector, and these games, right, they were very famous among the large population of India, and because of this new promotion and regulation of online gaming bill 2025, it has led to a storm in this industry, and we are seeing because of this multiple online platforms are now being or stopped, right? They have stopped their operations, right? And they have been banned, correct? And this bill was introduced in Lok Sabha on 20th of August 2025 by Ashwini Vaishnav, our Union Minister of Railways, Information Broadcasting and MEITY, and this bill was passed in Lok Sabha and passed by Rajya Sabha on 21st of October, correct? With this, we are seeing that this penalty has also been imposed on this, that is the online money gaming services will be punishable, and imprisonment of up to 3 years will be given, and a fine of up to 1 crore will be given, right? Also, if there is an advertising of online money games, they will also be punishable up to 2 years and 50 lakh rupees penalty, right? Because of which we are seeing multiple gaming industry, right, it has been hit very hard, right? And many of them has also stopped their operation. If we talk about this bill, right, see what is the objective of this act is to protect individuals, because a lot of people were losing money in these platforms, and also there were cases of money laundering also happening by these applications, correct? So this bill was introduced. Apart from this students, remember, if we talk about Asia's largest data center, where is this coming? It is coming in Visakhapatnam, and it is of Google. They are building their largest data center in Asia in Visakhapatnam, right? Take a note of this. Next, Nepal has officially joined India-led International Big Cat Alliance, that is IBCA, International Big Cat Alliance, right? This is an initiative where 7 species of big cats are being protected. This includes your tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar, and puma. Which is the nodal agency here? It is NTCA is the nodal agency here. Also, this NTA comes in under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So, this is Nepal that has joined IBCA, and there are 13 members including India in this. If we talk about India, in 2022 the tiger population reached 355. Oh sorry, this is for Nepal. The Nepal's population of tiger reached 355 in 2022, right? Take a note of this students. Next we are discussing about
Union Minister Amit Shah. Amit Shah is our Home Minister, right? He has inaugurated 2-day All India Speakers Conference. 2-day All India Speakers Conference, right? Where was this conference held? It was held in New Delhi, All India Speakers Conference, and it was to commemorate the 100th anniversary of Vittal Bhai Patel, a freedom fighter and becoming the first elected Indian president, speaker of the Central Legislative Assembly, right? So what we are talking about is, we are talking about a 2-day All India Speakers Conference held in New Delhi, and it was inaugurated by whom? Amit Shah, and it was for the 100th anniversary of Vittal Bhai Patel, who became the first elected Indian speaker, right? Take a note of this. And during this, a stamp, that is the portrait of Vittal Bhai Patel and Central Legislative Assembly on each side of the stamps, were launched here. If we talk about Vittal Bhai Patel, he was born on 27th of September in 1873 in Gujarat, and he is the elder brother of Sardar Vallabhbhai Patel, also known as the Iron Man of India, a freedom fighter. Right? Next is RRU, that is your Rashtriya Raksha University, has signed a memorandum of understanding with Shastra Seema Bal, right? And it is to strengthen training and academic collaboration in national security, right? So in the national security, for their training, for research and development, right, for academic development, this MOU was signed, and cutting edge academic and professional modules will be provided here for the training purposes, right? Then remember VOC port. It became the India's first VOC port became India's first to produce green hydrogen, right? Take a note of this. Then apart from this, remember Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin, he has inaugurated the VinFasts. VinFast is a company that is making electric cars, right? They have unveiled VinFast first electric vehicle plant, that is in where? In Tuticorin, Tamil Nadu. Next one more thing, remember here, Army Chief General Upendra Dwivedi, right? He inaugurated Agni Shodh Research Cell at IIT Madras. I repeat, General Upendra Dwivedi, he inaugurated Agni Shodh Research Cell at IIT Madras. This is also an important question. Moving on to banking and finance, SEBI has approved reclassification of LIC as a public shareholder in IDBI Bank. This move is a precondition for the privatization of IDBI Bank, in which LIC holds 49% stake as of June 2025. Take a note of this. So we are talking about the reclassification of the LIC shareholding by whom? By SEBI. In which entity? IDBI Bank. Reclassification from a promoter shareholder to a public shareholder, and no board representation, voting right below, or 10% stake reduction to 15% in less than 2 years. Right? So SEBI has attached strict conditions such as the voting right of LIC not exceeding 10%, and no direct or indirect control over the bank, and no board representation also. Right? Then apart from this, remember recently Prime Minister Narendra Modi inaugurated Kartavya Bhavan, right? And it was a beacon of modern governance and national duty. Take a note of this. Then where was the first ever young chef competition was held? First national young chef competition, right, to celebrate Indian culinary heritage. Where was it held? It was held in Chandigarh. Next is Malaysia has launched Right Bank, that is the world's first AI powered bank. I repeat, students, we are talking about Malaysia. They have scripted history with the launch of Right Bank, the world's first AI powered bank developed by the Malaysian for the local users. This initiative, right, if we talk about this is AI powered bank. That means the operation, the services, the customer care will be handled by AI, right? And here you can see the Right AI application has also been launched, and it is available in 3 languages, Bahasa, Malaysia and English, with Mandarin support is expected to be available by September 2025. Next is economy and business. Akums and the government of Zambia has announced a joint venture to set up pharmaceutical facility in Zambia, and this will promote manufacturing there. Right, as cheap labor will be available there, hence manufacturing will be set up, and this will also create employment in the local areas of Zambia, and money flow, economic development can be seen in those
areas. So Akim Drugs and Pharmaceuticals Limited signed this joint venture with the government of Zambia to establish this new pharmaceutical manufacturing facility in Zambia, right? And it is expected to be operational by December 2025 in Zambia. Then one more question, students. If I ask you, tell me which state became the first state to empanel sign language experts under the juvenile law. Which state? It is Punjab state, right? Then which country has banned YouTube for the children under the 16 years of age? So which is the country? It is Australia. So YouTube has been banned by them. Next, we are talking about appointments and resignation. Former CRPF Director General Anish Dayal Singh has been appointed as the Deputy National Security Advisor, and he will be reporting directly to the NSA Ajit Doval. Right? So, former CRPF Director General Anish Dayal Singh has been appointed as the Deputy National Security Advisor. He is a 1988 batch IPS officer from Manipur cadre. Then tell me which became 107th country to join the International Solar Alliance. It is Moldova. It is Moldova. Then if we talk about India in the world's largest aviation market, India stands at which position? India is the world's 5th largest aviation market according to IATA report. Next is SEBI has appointed Amit Pradhan, Avinash Pandey and Sanjay Chandrakant Purao as their executive directors. I repeat, SEBI appointed Amit Pradhan, Avinash Pandey and Sanjay Chandrakant Purao as their ED to strengthen key functional verticals within the regulator. Right? And here one more thing that you need to remember, that here if we talk about this Avinash Pandey, he will oversee the IT department, and with his expertise in the IT strategy, cyber security, big data analytics, it will make sure that this sector works properly for the company. Next is acquisitions and mergers. Japan's SMBC, they have received the RBI's approval to acquire 25% stake in Yes Bank, right? So approximate to 24.99% exactly, and approx 25% stake will be acquired by Japan's SMBC, and for which they received the approval from RBI. And this 20% and this SMBC, they have signed a definite agreement to buy 20% stake through a secondary purchase of another 5% later on. Correct? One more thing here, remember students, if I ask you, tell me recently who has been appointed as the head coach of Indian men's football team. Who has been appointed as the head coach? Khalid Jamil. Right? Then tell me who has been appointed as the chief executive officer of IndusInd Bank. Who is he? Rajiv Anand. And he will be in this position for the next 3 years. Next, DRDO, they have successfully conducted the maiden flight test of IADWS in Odisha in ITR, right? That is integrated testing of the coast of Odisha. So it is DRDO. They successfully tested this integrated air defense weapon system of the coast of Odisha, right? Very important. Then apart from this, if we talk about who has been appointed as the new chairman of BARC India, Gaurav Banerjee has been appointed here. Then who has been appointed as the chief CIO of Geo BlackRock Mutual Fund, right? Rishi Kohli has been appointed as the CIO, right? Then tell me recently, if I ask you, LEAP 1, this is the mission of which company? It was launched by Dhruva Space, right? And it was in collaboration with Australian partners, and it was launched using Falcon 9 rocket of SpaceX. Next is ISRO. They have conducted the first integrated airdrop test for Gaganyaan missile, right? So ISRO, right, they tested their first integrated airdrop test 1, right? It was of the crew module recovery system of the part of the India's first human spaceflight program, that is the Gaganyaan mission. It was tested where? At Satish Dhawan Space Center, that is in Sriharikota, Andhra Pradesh, and this was to evaluate the parachute deployment sequence and the capability of safe landing, right? Take a note of this. And during this trial, a dummy version of the capsule weighing 5 tons was lifted and airdropped by IAF, that is Indian Air Force Chinook helicopter, right? It was tested. Then next thing, if I ask you, tell me recently which Indian naval ship took part in
32nd edition of Simbex. Right, so which INS? It is INS Satpura, right, that took part in the 32nd Simbex exercise, and it was held where? Singapore. Right, then India, they received the final aircraft from Spain. Name that aircraft. It is C295 aircraft that was received by India from Spain. One more question. Which country will be hosting the 8th edition of the Commonwealth Youth Games? That will be held in the year 2027. So it is Malta that will be hosting the 8th Commonwealth Youth Games, and it were in which year? In 2027. Next is sports. India hosted the first ever Asian short track speed skating trophy 2025 in Uttarakhand. Where? In Uttarakhand. And this is the biggest international winter sport event. Then here only remember where this will be held. At the Maharana Pratap School College in Dehradun, Uttarakhand from 20 to 23rd of August. Then apart from this, student, tell me recently which Buddha sacred relic was returned to India after 127 years? Name it. It is your homework. Right? Then recently first BIMSTEC traditional music festival was held where? It is the first edition. So it was held in New Delhi. Right? Then apart from this, Niti Aayog, they have unveiled a roadmap for the electric vehicle development in India. Can you tell me how much amount was, or how it will unlock how much amount of economy for India? It is $200 billion roadmap for electric vehicles in India. Then next here you can see Asian Short Track Speed Skating Trophy 2025 hosted by India for the first time, where at Himadri Ice Rink in Dehradun, Uttarakhand. Total participating countries, 11 Asian countries you can see here. And in the medal tally, it is Thailand that secured the first position, India second, and Japan secured the third position here. Right, students? The next, Indian cricketer Chitesh Pujara has announced retirement from all the forms of cricket. He represented India in 103 test matches, scoring 7,195 runs. He played 5 ODIs for India, that is one day international. Right, and he was also awarded with the ICC Emerging Cricketer of the Year for 2013. Next is Durand Cup 2025 was held. Durand Cup is related to which event or which sport? Football. Right, and here it is Northeast United Football Club. They have retained their title, right, or they have retained their Durand Cup trophy by defeating the Diamond Harbour Football Club in the finals by 6-1. Right, the match final event was held where? In Kolkata, West Bengal. So it is Northeast United Football Club. They have won the Durand Cup again, and it is 134th edition of the Durand Cup. The last 133rd edition was also won by Northeast United Football Club. This time they defeated Diamond Harbour Football Club by 6-1 in the finals, and the final was held at Kolkata, West Bengal. Right, next is important day, students. World Water Week observed from 24 to 28th of August. This week is observed basically to raise awareness about water, right, such as clean water is important, water for sanitation is important, wastewater management is important, right? And this time it was the 35th edition that was observed. Then National Mountain Climbing Day, it is observed on 1st of August. National Watermelon Day observed on 3rd August. Hiroshima Day observed on 6th of August. Then 7th of August we observed National Handloom Day. Then 8th of August we observed Quit India Movement Day. Right, then coming back for World Water Week, there is a theme, that is water for climate action. Next students, next is your revision part. Right, this will be quite important for your learning, and then we'll proceed to the homework section. Who is appointed as the chairman of Tata Chemicals succeeding N. Chandrasekaran? So S. Padmaban has been appointed as the chairman of Tata Chemicals succeeding N. Chandrasekaran. Next, Venkatesh Korla was appointed as the global CEO of which company? Of Hinduja Global Solutions Limited, succeeding Partha De Sarkar. Right. Next is in May, Dash and Dash were recommended as the managing director, CEO of Union Bank of India and Central Bank of India respectively. So Ashish Pandey and Kalyan Kumar
Ashish Pandey was here recommended as the MD and CEO of Union Bank of India, and Kalyan Kumar as MD and CEO of Central Bank of India. So right option is option 4. Next, in May, economist Siddhi Olta was elected as the 9th president of African Development Bank during the African Development Bank annual meeting 2025 that was held in Ivory Coast. Ta belongs to which country? He belongs to Mauritania, right? And he will assume his office from 1st of September 2025 and his term will be of 5 years. Next, who was appointed as the new chairman of Telangana Grameen Bank in May, succeeding Y. Shobha? So, K. Prathapa Reddy was elected as the new chairman of Telangana Grameen Bank and he will be succeeding Y. Shobha. Next, Annalena Baerbock was elected as the president of which organization in June, succeeding Philemon Yang? So, United Nations General Assembly, right? So, Annalena Baerbock was elected as the president of UNGA, United Nations General Assembly. And she became fifth woman to overall lead the United Nations General Assembly. Next, mention the name of the person elected as the president of Poland in June, succeeding Andrzej Duda. So, Karol Nawrocki, right, has been elected as the president of Poland, succeeding Andrzej Duda. Next is identify the organization which appointed Rajiv Memani as the president for FY26, succeeding Sanjeev Puri. So CIA, Confederation of Indian Industry, was appointed or has appointed Rajiv Memani as the president, succeeding Sanjeev Puri. Next, mention the name of the person elected as the 14th president of the Republic of Korea, that is South Korea, in June, succeeding Yoon Suk Yeol. So, who has been appointed here as the 14th president of the Republic of Korea, that is South Korea? So, Lee Jae-myung has been elected as the 14th president, right, of the South Korea. Next, ACC has approved the extension of Swaroop Kumar Shah's tenure as MD and CEO of which public sector bank? It is for Punjab and Sindh Bank. And his term has been extended till 28th of Feb 2027. Next, Deutsche Bank AG appointed whom as the Chief Executive Officer of their Indian Global Capability Center, Deutsche Bank India, succeeding Dilip Kumar Khandelwal. So, Stefan Schoffer, right, has been appointed as the Chief Executive Officer of their Indian Global Capability Center. Next, who became the first women officer from the Indian Navy to be appointed as the 8-day camp to the President of India in May 2025? So, Yashashvi Solanki became the first women officer from Indian Navy to appointed as the ADC, that is 8-day camp to the President of India, Draupadi Murmu. Next, mention the name of the organization that extended the appointment of Indian cricketer Rohit Sharma as their brand ambassador for the second consecutive year to enhance the brand presence in India. It is TCL India Holdings Private Limited. Right? Next, Dick Schoof, the Prime Minister of Netherlands, submitted his resignation to the King William Alexander in June following the withdrawal of the far-right party Far for Freedom led by Geert Wilders from the ruling coalition. So Dick Schoof, the Prime Minister of Netherlands, has handed over his resignation recently. Next is who was given the interim charge of Managing Director and Chief Executive Officer of LIC by the Department of Financial Services starting 8th of June to 7th of September 2025. So Satpal Bhanno, right, was given the interim charge as the Managing Director and Chief Executive Officer of LIC. Next, who was appointed as the Chairperson of the Economic Advisory Council to the Prime Minister in June for a period of 2 years, succeeding Suman K.
Berry. So S. Mahendra Dev, right, appointed as the chairperson of the Economic Advisory Council to the Prime Minister. Next, who has been appointed as the part-time member of the 16th Finance Commission by the President of India Draupadi Murmu ma'am following the resignation of Ajay Narayan. So T. Ravi Shankar has been appointed as the part-time member of the 16th Finance Commission. Take a note of this important question, students. Next, name the organization that appointed Sudarshan Venu as the new chairman and managing director. So, which organization has appointed Sudarshan Venu as their new chairman and managing director? It is TVS Motor Company Limited, and he will be succeeding Sir Rolf Speth. Right? Next, CCI, that is the Competition Commission of India, has approved the acquisition of how much percentage shareholding in Kolte Patil Developers Limited, valued at approximately 1,167 crore rupees by BREP Asia 3 Holding India Holding Company 7 Private Limited. So they have approved 40% acquisition of it. Next, identify the company in which institutional investors acquire 1.8% stake from promoter entities Bajaj Holdings and Investment Limited and Jamnalal Sons Private Limited for 5,506 crore rupees. So identify that company. It is Bajaj Finserv Limited. Next, which country appointed Bollywood actor Katrina Kaif as their global tourism ambassador in June to boost the country's global tourism appeal ahead of the summer season and reinforce the ties with India? So it is Maldives. Correct. Next, in June, Axis Max Life Insurance Limited appointed whom as their next MD and Chief Executive Officer, succeeding Prashant Tripathi? So Sumit Madan. Correct. So Axis Max Life Insurance Company has appointed Sumit Madan as their new managing director and chief executive officer, succeeding Prashant Tripathi. Next is identify the person reappointed as the managing director and chief executive officer of CSB Bank Limited for a period of 3 years starting from 15th of September. It is, he will be Pralay Mondal. Next, in June, Gombozhov Zenstar was appointed as the 34th Prime Minister of Mongolia. Next, in June, Arun Srinivas was appointed as the Managing Director and Head of Meta in India, succeeding Sandhya Devanathan. Next, who was appointed as the first Women Secretary of the Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance, succeeding Ajay Seth? So, Anuradha Thakur was appointed as the first Women Secretary of the Department of Economic Affairs. Next, what is the rank of India in the 19th edition of the Global Gender Gap Report released by World Economic Forum? So, what is the rank here of India in the 19th edition of the Global Gender Report? Our country stands at 131st position, and Iceland has secured the first position here for the 16th consecutive time. Next, ILO database on international labor statistics released by the International Labour Organization in June. What is India's social security coverage as of 2025? It is 64.3%. Next, in June, the NATO, they have launched the 53rd edition of their maritime focused exercise, that is Baltic Operations 2025 Balatops. It was held where this question is asked. It was held in Latvia to strengthen the regional security in the Baltic Sea region. Next, as per the data released by the Tea Board of India under the Ministry of Commerce and Industry in June, what was the total area or total tea export from India during the calendar year 24? So it is 254.6 million kilograms. Next, according to the UN Women Fact Sheet titled Women in Politics 2025, in June, what percentage of women are currently represented in India's Union Cabinet, marking the first lowest proportion since 2011? It is, tell me,
According to UN Women's Fact Sheet, Women in Politics in June, what percentage of women are currently represented in India's union cabinet, marking the second lowest population or proportion since 2011? So it is 9.7%. Women ministers are there. Next, according to the report, Yearbook for 2025 Armaments, Disarmaments and International Security that is released by SIPRI in June, what is the number of Indian nuclear arsenal warheads as of January 2025? It is 180. Next, as per the Economist Intelligence Unit, that is EIU, they have released the Global Livability Index 2025. Which of the following cities is not among the top 5 most livable cities in the world? Among the following, if you see, Auckland of New Zealand is not among the top 4 cities suitable for living. Copenhagen on first, Vienna on second, Zurich third, Melbourne fourth, Geneva fifth. Next, as per the Skytrax World Airline Awards that was held at the Le Bourget Airport in Paris, which of the following airlines was not among the top 5 airlines globally? Among the following, Indigo is not among the top 5 airlines globally. Next, Amazon.com Incorporation successfully launched the first 27 satellites of its what? So it was for the 71st, or it was for what? Why they have launched these satellites? They have launched these satellites. So students, let's take this question in the homework part, right? Do comment below. Next is, what is India's rank in the Global Energy Transition Index as per the World Economic Forum's report released, Fostering Effective Energy Transition in 2025. So what is the rank of India in the Global Energy Transition? India stands at the 71st position. Next, which of the following universities is not ranked in the top 5 globally as per the Quackrelli-Simon World University Ranking released by Quackrelli-Simons? It is, which of the following university is not ranked in the top 5? If we see here, Indian Institute of Technology for Delhi, right, is not among the following listed here. MIT of USA first, Imperial College London second, Stanford University third, University of Oxford fourth, and Harvard University fifth position. Next, mention the organization that along with Food and Agriculture Organization has issued a report titled Hunger Hotspots. Right, this warns that the hunger is likely to get much worse in 13 countries and regions, which are among the world's most serious hunger affected areas in the coming months. So mention that organization that has along with Food and Agriculture Organization released this report. It is World Food Program. Next, according to the Performance Grading Index 2.0 for 23-24 released by the Department of School Education and Literacy, which of the following states and union territory is not among the top 5 performers in the school education? So it is Maharashtra, that is not one of the top performers in the school education. Next, which Indian university secured the highest global rank in the Time Higher Education University Impact Ranking 2025 by Times Higher Education? So, which Indian university it is? It is Amrita Vishwa Vidyapeetham, right? So, which Indian university secured the global or highest global rank in THE University Impact Ranking? It is Amrita Vishwa Vidyapeetham. Next, and they were on the 41st position globally. Next, according to the report titled Global Drought Outlook, Trends, Impacts and Policies to Adapt to a Drier World. Question asked is that OECD, that is Organization for Economic Cooperations and Development, in June the economic cost of the droughts are expected to increase by at least how much percent? It will be increasing by 15%. Next, what is India's rank in 2025 Sustainable Development Goal Index released by UN Sustainable Development Solutions Network in June 2025? So, what is India's rank in the Sustainable Development Goal Index? India stands at 99th position. Next, students, let's move to the homework section. First question is, tell me who has been appointed as the new IRDAI chairman. Name that individual and for how much long he has been appointed here. Then who has been appointed as the director on the RBI Central Board. Name that person. Third question, in Swachh Sarvekshan for 24-25, who has been appointed as the
cleanest city? Which city has been appointed as the cleanest city? Fourth question, tell me recently first Indian to reach the FIDE Women's World Cup final. Name her. And fifth question, tell me recently when was CRPF Raising Day was observed. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video, and I want to see maximum likes on this video, students. So if you are watching this video, I want you to hit the like button right away. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 26 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम की, जिन्होंने अभी अप्रूवल दिया टू प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। देन नेपाल ने अभी ज्वाइन कर लिया है इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। देन हम बात करेंगे अमित शाह ने इनॉग्रेट किया 2 डे का ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में। एंड आरआरयू एंड एसएसबी के बीच में एक एमओयू साइन किया गया ताकि ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दिया जा सके इन नेशनल सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी एंड मेनी मोर स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड रिफाइंड वे में हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं डेली बेसिस पे। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फिर। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम, जैसे आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने अभी असेंट दिया, मतलब अप्रूवल दिया है किस चीज़ को? टू प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। इससे क्या होगा कि जो ऑनलाइन गेमिंग बिल्स है ना, अब उनको रेगुलेट किया जाएगा एंड इनको इलीगल यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, जिससे आप देखेंगे जो ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है इस पर बहुत बड़ा डेंट हमें लगता हुआ दिख रहा है इंडियन सेक्टर में। काफ़ी सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अब बंद होते हुए दिखेंगे एंड इससे काफ़ी हार्मफुल ऑनलाइन गेमिंग मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस होती थी वो भी रुकती हुई दिखेंगी एंड लोग काफ़ी सारे पैसे अपने यहाँ पे लॉस भी करते थे, वो भी यहाँ पे स्टॉप होता हुआ दिखेगा। इस बिल को 20 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया था अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एंड देन राज्यसभा में 21 अगस्त को ये पास हो गया था। एंड ये बिल बेसिकली प्रोटेक्ट करेगा इंडिविजुअल्स को एंड मोस्ट वनरेबल पॉपुलेशन की ऐसे सोशल इकोनॉमिक गेम्स जो ये होते हैं, राइट, इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, राइट। यहाँ पे फिर 2 तरह की पेनल्टीज भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स। अगर गेम्स की है तो 3 साल का प्रिजन एंड 1 करोड़ या फिर दोनों। अगर एडवर्टीज करते हो आप किसी गेम को तो 2 करोड़ की 2 साल की प्रिजन एंड 50 लाख की पेनल्टी, एंड अगर फैसिलिटेटर हो तो 3 करोड़ एंड 1 CR रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मार्क करके चलेंगे, ये चीज़ें याद रखनी है। एंड इससे इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डेंट होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो इंडिया में जो ये ऑनलाइन गेम्स होते थे अब ये बंद होते हुए दिखेंगे। इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए संचार साथी एप्लीकेशन अभी लॉन्च की गई किस लैंग्वेज में, तो हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च की गई थी, राइट। देन किसने होस्ट किया 4th एडिशन ऑफ आदि कर्मयोगी रीजनल लैब को, राइट, किसने होस्ट किया? ओडिशा के द्वारा होस्ट किया गया था, राइट, 4th एडिशन ऑफ द आदि कर्मयोगी रीजनल लैब, ताकि ग्रास रूट गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जा सके। फिर इसी के अलावा बता दो वो कौन सा पोर्ट है जो कि फर्स्ट पोर्ट बना है इन इंडिया जिन्होंने प्रोड्यूस किया ग्रीन हाइड्रोजन को, तो वो कौन सा पोर्ट है? वो है VOC पोर्ट। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेपाल ने ऑफिशियली अभी ज्वाइन किया इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, IBCA को। इसके अंडर हम 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपकी लेपर्ड, लायन, राइट, टाइगर्स, इन सबको यहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है। स्नो लेपर्ड्स, जैगवार, प्यूमा, चीता, राइट। एंड 13 मेंबर्स हैं यहाँ पे इंक्लूडिंग इंडिया एंड अभी जिसने ज्वाइन किया है वो है नेपाल रिसेंटली। ठीक है, फिर विनफास्ट, ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर है। ये अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट इस्टेब्लिश किया इन्होंने एंड
तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने ये इनॉग्रेट किया कहाँ पर, तुथिकोडी तमिलनाडु में ये एस्टेब्लिश्ड है, राइट। देन अगर मैं बात करूँ पहले बिम्स्टेक म्यूजिक फेस्टिवल की, ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल की, ये कहाँ पर होता हुआ दिखा हमें, न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, एंड ये पहला एडिशन था इसका। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अमित शाह जी, राइट। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, राइट। इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया 2 डे लॉन्ग ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, एंड ये कमेमोरेट करती है 100 एनिवर्सरी ऑफ विट्ठल भाई पटेल। ये विट्ठल भाई पटेल ये एक फ्रीडम फाइटर हैं, राइट, एंड ये क्यों एक और चीज़ के लिए रिलेटेड है, राइट। ही इज़ ऑल्सो द फादर, ही इज़ ऑल्सो द ब्रदर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, एल्डर ब्रदर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, राइट। तो उनके ये बड़े भाई हैं, राइट, एंड इनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे ये 2 डे का कॉन्फ्रेंस था, जहाँ पर एक पोस्टल स्टैम्प भी लॉन्च किया गया जिसपे विट्ठल भाई पटेल की एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग की यहाँ पे फोटो है। विट्ठल भाई पटेल की अगर बात करें 1873 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में, राइट, एंड 1925 में ये इलेक्ट किए गए थे फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आरआरयू ने साइन किया एक एमओयू शस्त्र सीमा बल के साथ ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके ट्रेनिंग एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन को इन नेशनल सिक्योरिटी। ट्रेनिंग के ऊपर फोकस होगा, रिसर्च के ऊपर फोकस होगा, एकेडमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होगा ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, मार्क करेंगे। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा अपना घर ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली क्या है, ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये एक रेस्टिंग फैसिलिटी है हाईवेज पर कि ट्रक ड्राइवर्स यहाँ पर आके आप रेस्ट कर सकते हैं, राइट। देन वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने एम्पैनल किया साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को, तो पंजाब के द्वारा यहाँ पे साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, एम्पैनल किए गए हैं, ये पहली स्टेट बन गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। सेबी ने अप्रूव किया रिक्लासिफिकेशन ऑफ एलआईसी एज अ पब्लिक शेयर होल्डर इन आईडीबीआई बैंक, राइट। तो आई रिपीट, ये पहले प्रमोटर शेयर होल्डर थे जिनको अब पब्लिक शेयर होल्डर घोषित कर दिया गया है सेबी के द्वारा, राइट। रिक्लासिफिकेशन ऑफ एलआईसी अब एक पब्लिक शेयर होल्डर बन गया है आईडीबीआई बैंक में। ये मूव प्री कंडीशन है फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ आईडीबीआई बैंक इन विच एलआईसी होल्ड्स 49% स्टेक एज ऑफ जून 2025। देन अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 107th मेंबर कौन बन गया है, वो है मोल्डोवा। हेडक्वार्टर कहां पर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया जो कि वर्ल्ड का पहला एआई पावर्ड बैंक है। यहाँ पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी मेंटेनेंस होगा, राइट, जो भी एप्लीकेशन होगी, वेबसाइट होगी, जो भी कस्टमर सपोर्ट होगा, वो सारा एआई के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड मलेशिया ने यहाँ पे एक हिस्ट्री रच दी है बाय लॉन्चिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई पावर्ड बैंक डेवलप्ड बाय द मलेशियन इनके लोकल यूजर्स के लिए। ये अभी इनिशियली 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, राइट, जो कि आ जाती हैं आपकी बाहासा, मलेशिया एंड इंग्लिश, एंड जल्दी ये मैंड्रिन सितंबर तक अवेलेबल हो जाएगी 2025 तक। फिर यहीं पे याद रखेंगे राइट एआई एप्लीकेशन भी इनके द्वारा यहाँ पे लॉन्च की जा चुकी है, मल्टीलिंगुअल ये ऐप रहेगी। इसी के अलावा इंडिया की क्या रैंक है इन द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट या फिर लार्जेस्ट एविएशन मार्केट, तो इंडिया 5th पोजीशन पे आ जाता है एज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। ये IATA के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस पे। इकुम्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ जाम्बिया, इनके द्वारा एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया गया ताकि फार्माक्यूटिकल फैसिलिटी को एस्टेब्लिश किया जाए जाम्बिया में। इससे होगा क्या, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होगी, राइट, तो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। कंपनी को बेनिफिट क्या होगा कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग मिलेंगे, जो वर्कर्स मिलेंगे, वो चीप लेबर यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा, कॉस्ट कटिंग हो सकेगी। एंड जाम्बिया को क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे इकोनॉमी डेवलप होती हुई दिखेगी, पैसा इनफ्लो आता हुआ दिखेगा, यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती हुई दिखेगी, राइट। एंड दिसंबर 2025 तक ये एक्सपेक्टेड है कि ये फार्माक्यूटिकल फैसिलिटी ऑपरेशनल हो जाएगी, राइट। चलिए, आरबीआई का रेपो रेट क्या है स्टूडेंट्स, 5.5%। एको बैंक के या फिर एको इंश्योरेंस के किनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, MS धोनी को, राइट। देन इंडियन मैन फुटबॉल टीम के हेड कोच कौन बने हैं,
खालिद जामिल, राइट। देन मनापुरम फाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? दीपक रेड्डी। 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन अपॉइंट किए गए हैं? संजय वत्सयन, संजय वत्सयन, राइट। देन किनको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडसइंड बैंक? तो वो है राजीव आनंद, राइट। देन BARC के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? गौरव बनर्जी। देन CIO कौन अपॉइंट किए गए हैं? जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के ऋषि कोहली। ये मार्क करेंगे सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। फॉर्मर CRPF डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह, इनको अपॉइंट किया गया डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एंड ये किनको रिपोर्ट करेंगे? ये रिपोर्ट करेंगे टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, ठीक है। नेक्स्ट, एंड ये किनको रिपोर्ट करेंगे? NSA अजीत डोभाल जी। नेक्स्ट, सेबी ने अपॉइंट किया अमित प्रधान, अविनाश पांडे एंड संजय चक्रावंत पुराव को एज देयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, राइट। इससे जो की फंक्शनल वेक्टर्स हैं, वर्टिकल्स हैं विद इन द रेगुलेटर्स, वो स्ट्रेंथन होते हुए दिखेंगे। एंड अर्लियर दे सर्व्ड एज द चीफ जनरल मैनेजर्स ऑफ सेबी, ठीक है। देन इसी के अलावा याद रखेंगे पहला कमर्शियल मिशन लीप 1 लॉन्च किया गया किस कंपनी के द्वारा? तो लीप 1 किसका है? ध्रुवा स्पेस का है। ये याद रखेंगे, इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन फिर अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट 17 के अंडर फ्रिगेट हिमगिरी, ये यहाँ पे डिलीवर किया गया किसके द्वारा? GRSE के द्वारा डिलीवर किया गया। देन इंडिया ने अभी एक फाइटर जेट रिसीव किया है, कहाँ से? स्पेन से। इसका नाम बताओ, वो क्या है? C295, राइट। दोनों मार्क करेंगे। फिर आ जाते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। जापान के SMBC इन्होंने रिसीव किया RBI का अप्रूवल कि ये 25% स्टेक एक्वायर करेंगे किसमें? येस बैंक में, राइट। 25% स्टेक एक्वायर करेंगे ये येस बैंक में। देन 8वां एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कहाँ पर होंगे? 2027 में। ये होंगे माल्टा में। कहाँ पर होंगे? माल्टा में, राइट। देन इसी के अलावा इनॉग्रल एडिशन ऑफ द चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? ये आपका हुआ था सऊदी अरेबिया में, राइट। किसने जीता? मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया ई स्पोर्ट चेस वर्ल्ड कप। मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है। फिर आ जाते हैं DRDO ने भी सक्सेसफुली कंडक्ट किया मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ IADWS। कहाँ पर? उड़ीसा में इसको टेस्ट किया गया, चांदीपुर उड़ीसा में, राइट। एंड यहीं पे अगर मैं बात करूँ IADWS, ये क्या है? IADWS ये है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं। ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा इसको यहाँ पे टेस्ट किया गया था, राइट। यहाँ पर आपके शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई, राइट। एंड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को भी यहाँ पे टेस्ट किया गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल हैंडलूम डे। क्विट इंडिया मूवमेंट हमने 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया। देन हिरोशिमा डे 9 अगस्त को। नेशनल वाटरमेलन डे 3 अगस्त को। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त को। एंड वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक आपका ऑब्जर्व किया गया 1 से 7 अगस्त तक, राइट। फिर आ जाते हैं इसरो, इन्होंने कंडक्ट किया पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट गगनयान मिशन के लिए, राइट। एयर ड्रॉप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पेलोड था जिसको एयर ड्रॉप किया गया, हवा से फेंका गया एंड पैराशूट की मदद से इसको ड्रॉप किया गया। तो ये था आपका इसरो का पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, गगनयान मिशन के लिए इसको यहाँ पे टेस्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो वेट था 5 टन का, ये वेट था, चिनूक हेलीकॉप्टर से इसको ड्रॉप किया गया था। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के ऊपर आते हैं। इंडिया ने होस्ट किया पहला एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 को, कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहाँ पर? हिमाद्री आइस रिंक में, जो कि महाराणा प्रताप स्कूल कॉलेज में है इन देहरादून उत्तराखंड, जो कि 20 से 23 अगस्त तक यहाँ पे ये इवेंट होता हुआ हमें दिखेगा, राइट। एंड यहाँ पे टोटल 11 एशियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, आप देख सकते हैं। 9 इवेंट्स होंगे। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है। मेडल टैली में अगर देखें तो थाईलैंड फर्स्ट पे रहा, सेकेंड इंडिया पे रहा एंड थर्ड जापान रहा। मूविंग ऑन, इंडियन क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ये 103 टेस्ट क्रिकेट्स इन्होंने इंडिया के लिए खेले हैं, 7195 रन्स बनाए हैं एंड 5 ODIs खेले हैं इन्होंने इंडिया के लिए, राइट। एंड ये ICC एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे 2013 के लिए।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं दुरंत कप पे। दुरंत किस स्पोर्ट से रिलेटेड है स्टूडेंट? ये फुटबॉल से रिलेटेड है, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, इन्होंने वापस से या फिर इन्होंने डिफीट किया है डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को। 6-1 से इन्होंने डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हराया इन द फाइनल, जो कि फाइनल हुआ था कोलकाता वेस्ट बंगाल में, राइट। एक और चीज़ याद रखेंगे, दुरंत कप फुटबॉल से रिलेटेड है। एंड ये कौन सा एडिशन था दुरंत कप का? ये 134th एडिशन था, जो कि किसके द्वारा जीता गया? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा। जो 133rd एडिशन था वो भी इन्हीं के द्वारा जीता गया था, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया जाता है 24 से 28 अगस्त तक, ताकि वाटर को कंजर्व करने के ऊपर बात की जा सके, वाटर को कंजर्व किया जा सके, इसकी इंपॉर्टेंस बताना, इनके इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंस बताना, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड आपका सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे थीम याद रखेंगे, वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये थीम रहेगी। वर्ल्ड वाटर वीक 24 से कब तक? 28 अगस्त तक ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी, एंड इसके बाद चलेंगे फिर होमवर्क सेक्शन पर। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इन्होंने साइन किया एक MOU, विच ऑफ द फॉलोइंग किसके साथ? टू सिंप्लीफाई द कस्टमर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। तो SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ ये पार्टनरशिप की गई, एंड KYC की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ईज बनाने के लिए ये किया गया, एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने क्लाइमेट सेफ इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जो कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैरामेट्रिक क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो इंडिविजुअल्स क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर इवेंट्स आते हैं जैसे एक्सट्रीम हीट, कोल्ड वेव या एक्सेसिव रेनफॉल, उस टाइम पे वो जॉब नहीं कर सकते, कई सारी बैन लग जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली NCR रीजन में। तो ऐसे टाइम पर लोगों को मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए ये क्लाइमेट सेफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। एंड यहाँ पे 6,000 रुपये पर वर्कर दिया जाएगा अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो पॉल्यूशन को मापता है, अगर वो 400 को 2 बार टच कर देता है, सेकेंड टाइम अगर वो टच कर देता है तो दूसरी स्ट्राइक पर यहाँ पे 6,000 रुपये वर्कर्स को दिए जाएंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक, जिन्होंने एक MOU साइन किया लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये एनहेंस करेगी बैंकिंग सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड 26 लैंड पोर्ट्स जो कि सिचुएटेड है इंडिया के बॉर्डर्स पे विद नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। तो किस बैंक ने? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, SRO, कौन सी SRO है? वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने एक MOU साइन किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो फाइनेंशियल एक्सेस है, मतलब फाइनेंस लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए, टू स्मॉल, माइक्रो एंड वीमेन लेड एंटरप्राइजेस तक इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो कौन सा वो SRO है? वो है साधन, इन्होंने पार्टनर किया। ये साधन न्यू दिल्ली बेस्ड SRO है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये रीच किया एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ $824.9 बिलियन इन FY25 एज पर द डाटा ऑन सर्विसेज ट्रेड फॉर मार्च 2025, जो कि RBI के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का जो पेमेंट सर्विस, आइडेंटिफाई करो इंडिया का पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर फॉर द पेमेंट गेटवे इन अप्रैल, जो एनेबल करेगा बिजनेसेस को टू इंटीग्रेट AI ड्रिवन सिस्टम्स को, तो वो है रेजर पे। नेक्स्ट आ जाते हैं जाक ई पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि है जाक पे। इन्होंने फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथराइजेशन अप्रूव किया RBI का टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? मर्चेंट्स से जो पैसा ले सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं विद इन इंडिया, ठीक है। एंड अगर क्रॉस बॉर्डर होगा तो मतलब बाहर की कंट्रीज से भी वो पैसा मर्चेंट, बाहर की कंट्री में जो मर्चेंट्स हैं उनसे पैसा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं IFSCA, इन्होंने एक MOU साइन किया किस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ टू बूस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट इन जिफ्ट सिटी। तो वो कौन है? कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट, जिन्होंने यहाँ पे टाइप किया? वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, NISM। एंड ये NISM एक पब्लिक ट्रस्ट है जो कि 2006 में स्टैब्लिश किया गया था सेबी के द्वारा। मूविंग ऑन, किस कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM को? ये चाइना में भी लॉन्च किया गया था। आप अपने गोल्ड को इसमें डालो, वो मेल्ट कर देगा, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे, प्योरिटी के बेसिस पे एंड क्वांटिटी, वेट के बेसिस पे आपको जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इंडिया में ये गोल्ड सिक्का के द्वारा लॉन्च किया गया है, हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम
investment threshold or ticket size mandated by SEBI for the issuance of securitized debt instruments for RBI regulated originators and unregulated entities. तो ये 1 करोड़ लिमिट यहाँ पे कर दी गई है. इससे क्या होगा कि यहाँ पे सीरियसनेस देखने को मिलेगी हमें इन इन्वेस्टर्स के अंदर. करेक्ट. एंड ये मैंडेटरी है. इट इज़ नाउ मैंडेटरी टू हैव अ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं फॉर द ओरिजिनेटर्स, राइट. ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द ओरिजिनेटर्स, राइट. टेक अ नोट ऑफ दिस. नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने दैट सपोर्टेड द हरियाणा स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि एआई के ऊपर काम किया जा सके, एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके, जो कि है हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राइट. तो कौन सा है? वो है वर्ल्ड बैंक. तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी, राइट, इनकी पार्टनरशिप हुई है वर्ल्ड बैंक के साथ ताकि हरियाणा में एआई के ऊपर काम किया जा सके. मूविंग ऑन. एंड एक और चीज़, 2025 से 2028 इन 4 सालों के लिए यहाँ पे काम हमें देखने को मिलेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं एसबीआई. इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट फॉरकास्टिंग द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन मेजरिंग द सीपीआई इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन बिलो 3% ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26. अभी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन कम है, इसी की वजह से 50 बेसिस पॉइंट हमें यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिली हमारे रेपो रेट में, जिससे हमारे जो बैंक के लोन्स हैं, राइट, वो सस्ते होते हुए दिखेंगे. होम लोन सस्ता होता हुआ दिखेगा. मार्केट में कैश फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा, पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, इकोनॉमिक ग्रो होती हुई दिखेगी, राइट. एंड यही चीज़ अगर इन्फ्लेशन कम रहेगी तो अगले क्वार्टर भी हमें यही चीज़ ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर इन्फ्लेशन कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगा, प्राइस कम बढ़ेंगे तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आएगी. नेक्स्ट आ जाते हैं कोटक महिंद्रा बैंक. इन्होंने लॉन्च किया प्रीमियम इनवाइट ओनली कोटक सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड को, जो टारगेट कर रहा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को के कस्टमर सेगमेंट को अंडर द सॉलिटेयर प्रोग्राम. फिर आ जाते हैं राइट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग द आरबीआई रिलैक्सिंग नॉर्म्स फॉर एफपीआईज टू बाय लोकल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाय रिमूविंग द शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट एंड कंसंट्रेशन लिमिट इन मार्च. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही देखने को मिलता है. नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम को इनमें थ्रू अ कोलैबोरेशन विद बाइनेंस पे एंड डीके बैंक. तो ये है भूटान. अब भूटान में क्या होगा? टूरिज्म बढ़ता हुआ दिखेगा, राइट, क्योंकि लोग यहाँ पे बाइनेंस की मदद से भूटान की टिकट्स बुक कर सकते हैं, एयर टिकट्स बुक कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ पे जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे कर सकते हैं, राइट, होटल्स में पे कर सकते हैं, फूड के लिए पे कर सकते हैं, लीजर के लिए पे कर सकते हैं थ्रू बाइनेंस. एंड यहाँ पे बिटकॉइन, BTC, USDC, यूनाइटेड नेशन ये यूएस का कॉइन है, एंड BNB ये बाइनेंस कॉइन है. इन तीनों में यहाँ पे पेमेंट आप कर सकेंगे. नेक्स्ट, आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन को एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फाइनेंशियल मार्केट, जो कि रेगुलेट की जाती है आरबीआई के द्वारा. एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक एसोसिएशन है कमर्शियल बैंक्स की, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, प्राइमरी डीलर्स की, एंड इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1998 में. नेक्स्ट आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स कम्युलेटिव प्रॉफिट. इट रोज टू अ रिकॉर्ड लेवल इन FY25 रजिस्टरिंग अ 26% ग्रोथ ओवर द फाइनेंस ईयर. तो पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ यहाँ पर आपकी कौन सी रहेगी. तो इसमें से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन राइटली मेंशन रहेगा? तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट आ जाता है मेंशन द नेम ऑफ द बैंक बिकमिंग द फर्स्ट फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन टू ओपन देयर ब्रांच इन जिफ्ट IFSC. तो वो कौन सा है? वो है आपका कतर नेशनल बैंक ग्रुप, राइट. ये पहला अपनी ब्रांच खोलेगा IFSC में, जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में. फर्स्ट बैंक फ्रॉम MEA जो कि है मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन. नेक्स्ट, उस मेंशन द नेम ऑफ दैट स्पेशलाइज सूट ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट कैनरा बैंक के द्वारा जो लॉन्च किया गया था टू कैटर द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस. ये है कैनरा ट्रू एज. इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट एक्सटेंडेड 191 करोड़ फंडिंग टू उत्तराखंड, ताकि वहाँ के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा सके अंडर उत्तराखंड अर्बन सेक्टरल डेवलपमेंट एजेंसी. यहाँ पे अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा. बेटर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बेटर रोड्स, बेटर सर्विसेज देखने को मिलेंगी. तो ये है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ये यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, राइट. ये इन्होंने एक्सटेंड किया 1910 करोड़ रुपए की फंडिंग. नेक्स्ट, आरबीआई ने इम्पोज किया एक टोटल मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 2.72 करोड़ रुपीज ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्टेट बैंक पे 1.72 करोड़ की एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे 1 करोड़ की ये पेनल्टी इम्पोज की गई फॉर नॉन कंपाइलेंस विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस. नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द 2 न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स लॉन्च्ड बाय इंडियन बैंक इन 2025 टू प्रोवाइड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. तो वो है IND सिक्योर एंड IND ग्रीन.
नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई इन मई टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। वो हम देख ही चुके हैं क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर, तो ये है पेयू पेमेंट्स। नेक्स्ट, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, इसमें इंक्लूड किया गया किसको अभी रिसेंटली, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड को इंक्लूड किया गया अलॉन्ग विद एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड जो कि नाइका है। इससे क्या होगा, इनकी रीच बढ़ती हुई दिखेगी एंड पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी इन इंडिया जिन्होंने पार्टनर किया मंगोलिया के खान बैंक के साथ ताकि उनके कोर डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को और मॉडर्नाइज किया जा सके, अपडेट किया जा सके। तो वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड एंड टीसीएस BANS। टीसीएस का बैंकिंग एंड कोर सिस्टम्स ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को यहाँ पे यूज किया जाएगा खान बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट डेट सिक्योरिटीज और डेट इश्यूज फॉर विच द सेबी मैंडेटेड द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म इन मे टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। तो कितना अमाउंट है, पहले वो अमाउंट हमें देखने को मिलता था कि वो होता था 50 करोड़ रुपए, लेकिन अब उसको गिरा के कितना कर दिया गया है, 20 करोड़ कर दिया गया है। इससे होगा क्या कि जो डेट सिक्योरिटीज का इशू साइज है ना, बुक मैकेनिज्म है, वो बेटर होता हुआ दिखेगा एंड जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि पहले क्या था 50 करोड़ रुपए मिनिमम वैल्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट डेट इश्यूज, अब वो गिर के 20 करोड़ हो गया, तो ज़्यादा फ्लो हमें देखने को मिलेगा, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हुए देखेंगे। Next, students, let's move to the homework section. First question is, tell me who has been appointed as the new IRDAI chairman. Name that individual and for how much long he has been appointed here. Then who has been appointed as the director on the RBI Central Board. Name that person. Third question, in Swachh Sarvekshan for 24-25, who has been appointed as the cleanest city? Which city has been appointed as the cleanest city? Fourth question, tell me recently first Indian to reach the FIDE Women's World Cup final. Name her. And fifth question, tell me recently when was CRPF raising day was observed. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video, and I want to see maximum likes on this video, students. So if you are watching this video, I want you to hit the like button right away.